about the different tabs which used to be there under the heading section of the blog. इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे एक ब्लॉग का जो हेडिंग सेक्शन है वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टैब्स कैसे यहाँ पे हम लोग अटैच कर सकते हैं। गो टू द लेआउट सेक्शन। हेडर के नीचे क्रॉस कॉलम का एक ऑप्शन है। ये जो क्रॉस कॉलम का ऑप्शन है यहाँ पे आके आपको गैजेट चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आके आपको गैजेट चूज करना पड़ेगा। क्लिक ऑन इट। यू हैव टू चूज पेज गैजेट। पेज गैजेट का फर्स्ट लिंक शुरू होता है होम से। उसके बाद आपको ऐड ए न्यू आइटम करके एक एक करके आपको जो टैब है हेडिंग सेक्शन के नीचे आपको ऐड करना है। क्लिक ऑन इट। यू हैव टू पुट नेम लाइक योर स्कूल्स वेबसाइट। माई स्कूल वेबसाइट इज KVM श्री KV Sevoke. You have to put here the URL of the school. Save option. Add another item. Now you can put the name of your RO. Like for me it is KVS RO Kolkata. Now you have to put the URL of KVS RO Kolkata. Save. Likewise, you have to add different type of pages under the heading section of your blog. For every time you have to click add a new item. Then you have to put the page name, the tab name, and then you have to paste the link of that page or of that website. Till now we have added these three pages, these three tabs. You can see here under the heading section home, PM Sri KV Sevoke Road, KVS RO Kolkata. Likewise you can add the tab names, the external website's name, or even you can add the page of your own blog to this heading section. As for example, you can see this blog. You can see this blog. This is my blog, my library blog. I have added all these headings important for my student and teachers. So you can create the heading section likewise. Now क्रॉस कॉलम 2 सेक्शन यहाँ पे आप कुछ HTML कोड से भी इमेजेस का स्क्रॉल बना के यहाँ पे शो करवा सकते हैं। और ये है पोस्ट सेक्शन। आपका जो मेन पोस्ट है वो यहाँ पे शो करेगा। और in both sides you can see different type of options. You can add different type of gadgets in both sides of your page. In next section we will learn about how we can decorate or manage or organize the important things on the both side of the blog. Thank you.